Hello, good morning, sir. Kishore, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, आपण 11 वाजता स्टार्ट करू. Okay, sir. Thank you. No issue. Okay, sir. Okay, sir. Sir, audio is clear, no? Yes, sir. Yes, sir. Your audio is clear. Thank you. Hello, Kishore sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, we will start at 11, okay? Yes, sir. No issue. और क्या बोलते हैं सर क्या हाल है? Participants are joining. And 11 at 11 we start. Definitely, sir. No issue. Okay, yeah.
Hello, Evatkar sir. Hello, sir. Okay, I started. Good morning to one and all attended here on this digital platform, and thank you for joining us today. At the outside, I pay my humble homage to great visionary leader, late Shri Guru Indraji Vanjari sir, founder president of Amar Seva Mandal. I am Dr. Ashish Ratkar from Department of Electronics. I feel privileged to welcome you all on behalf of Kamala Nehru Mahavidyalaya Nagpur to the sixth and the last day of the National One Week Faculty Development Program on ICT tools for effective teaching and learning, organized by Kamala Nehru Mahavidyalaya Nagpur. Before I proceed, it's my duty to give my humble thanks to the esteemed management of this college who always insist and guide us in every step for organizing such as innovative program for the enhance the knowledge of faculties as well as of the student by them through the interaction with the esteemed professionals from the academic and the industrial as well. Then someone said that aim of the education is the knowledge, not of the fact, but of the values. So it is on the occasion like this, we get opportunity to test our knowledge and understanding. We look forward and get exposure about what the best of the brain thinking and provide the benefit to their students from their effective teaching and learning by the very dynamic issue for the faculties for their development by the ICT tools for the effective teaching and learning. So now today we are going to learn about the very dynamic topic standardization research tools for e-report writing by the today's eminent speaker guest Dr. S.B. Kishore sir, Head Department of Computer Science and Head of Center of Higher Learning and Research of Computer Science, Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur. So it is my pleasure to introduce our esteemed guest, who is our today's speaker, Dr. S.B. Kishore sir, is the eminent and dynamic personality in the field of computer science and information technology. So I welcome you, sir. I am glad to introduce our today's eminent speaker. Sir is the head of the computer science department working since 2000 in the Sardar Patel Mahavidyalaya, Chandrapur. So he is chairman of the computer science board, Gondwana University, Gadchiroli, and the member of the council. Sir is working as a member of the computer science board to the 6th NAC A and above the grade university and autonomous colleges. During the COVID, sir had uploaded more than 225 videos on the teaching and teaching aids for faculties, academics, research, and other utility videos on his YouTube channel. The special achievement of his that more than 161,000 viewers viewed his videos across the 38 countries. So far, he has been credited with the 4 patents, including Australian patents. 14 research scholars have been awarded as a PhD under his guidance, and the 6 scholars have been awarded MPhil degree. So he is double PhD holder in the professional subject that includes the computer science and management, has written the 67 books, and if we rewrite the figures, the book of goes in 114 books. So many of his books are including as a textbook and a reference book in the various courses and universities. So he has published 54 articles in a Hitwada newspaper, and most of the research topics for making awareness of the research among the readers. So he has published 59 papers in a reputed journal, including Scopus, and they published 57 papers in a various national and international conferences. So he has trained management council member, Senate member, academic council member of the Gondwana University, Gadchiroli, for the online voting system for the first of its kind
in the entire India for online selection of the member of the panel for the Vice Chancellor. So he has been a resource person more than 75 times at many national, international conferences and academic staff, college, PhD coursework, teaching conferences, the international, national, international conference and academic staff, colleges, PhD coursework, teaching, learning centers, etc. So Dr. S.B. Kishore sir has trained more than 9,000 PhD research scholars and faculty members on the topic of ICT research and cited tools and plagiarism, etc. So most important to honor his dedication and determination for his work, he has been awarded many awards. This including some of the prestigious like Ideal Teacher Award at 2012 and Best Writer Award in 2013 by the ITM Nagpur University. So Ideal Teacher Award 2016 by the Gondwana University, Gadcholi. So Distinguished HOD Award of the Computer Society of India, Mumbai. So Shiksha Ratna Award in 2019 of the Nagpur. So he is holder of the Indian Book of Records in 2014 for written by the maximum books in a computer science. Best faculty development for the online teaching during COVID-19 and ISA. Sufficient for the So excellent teacher award in 2021 for SSM Mandal Chandrapur. Apart from his academic work, he not only strongly involved in a social activities like a blood donation and a book donation, but also he is a meritorious in sports like a 4 times district champion in the carom tournament and the 3 times district champion in a chess tournament and many more feathers in his cap. So the last but not the least, the ex-vice chancellor, Professor Dr. Srinivas sir of the Gondwana University, Gadcholi, sent him a letter to the appreciation for his valuable contribution and guidance for the successful conduction of the first online examination of the university in 2020 in a similar and a similar appreciation by the IIT Mumbai for the contribution to the IIT Spoken Tutorial Award awareness and the conducting of the program. So now I request to the Dr. S.B. Kishore sir to start his speech. Over to Kishore sir. Thank you. Thank you very much, sir, Dr. Rakesh, for a lengthy introduction. So it was not required. So thank you. So first of all, I'm very much thankful to the organizer and the management of the Kamla Nehru Mahavidyalaya for conducting such a wonderful program, FTP program for the benefits of one and all. As well as I'm very much thankful to Dr. Vasudev Gurunlele, the coordinator of this entire program, for inviting me this particular FTP. So with the kind permission of organizer, I will start my session. So I hope that the screen is visible to one and all. So in the today's sessions, we are going to discuss about the effective research report writing tools, the practical approach. So before going to start my session, I would like to have this entire session in an interactive mode only. So of course, many times you need to unmute yourself and you need to answer some of the questions. Okay, so feel very easy while interacting with me. It is not necessary to ask your question at the end. Okay, but make sure that all your questions should be related to the topic only. So like earlier said, keep your mic mute whenever you are not making any kind of interaction with me. Now it's a kind request to all of you to open a browser and type slido.com either on your laptop or mobile or whatever the device that you are using, because we have some small quiz over here. सभी को रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेब ब्राउजर ओपन कीजिए और वहां पे slido.com टाइप कीजिए. I will show you how to do it.
ओके, यहाँ पे आपको लिखना है slido.com, that's all, on your web browser. So you will get a screen something like this, and here you need to type a code called as 606144. 606144. ये जो ब्राउजर है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कोड टाइप करना है 606144, and then press enter key. That's all. That's all. Okay, I hope that all of you are done so far. And then you will get a question over here, and that you need to answer. So let's start. How is your mood today? I know that today is your last day of the session. So for 10 responses recorded, I'm expecting at least 100 because there are more than 483 participants are there. Let me revise once again. You can also do one thing. You can also scan this QR code and you can join this quiz. इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पे slido.com and then type a code 606144. So for 19-20 responses, good. Just another, I'm going to give 1 minute, 1 more minute. 22. I hope that no one is facing any kind of issues. Twenty-four people, 24 participants. Okay, I'm expecting more. Please join immediately. आप QR इसको स्कैन करके स्कैन भी कर सकते हैं in order to join this quiz, or type slido.com on your web browser followed by type code 606144, and then this question will be flashed on your screen on your device and you need to answer it. That's all. Okay, last 30 seconds for you, and then we will start. Nice to see your messages. All of you are feeling good. Okay, let us start. Now, from now onwards, there is a time limit for each and every question, and within that time limit, you need to answer. From now onward, there is a time limit for each and every question. Okay, so based on the difficulty of the level of the question, the time has been fixed. So let us start. The first question that is going to appear on your screen is: the articles published in research journals are, whether they are reference source, secondary source, primary source, or tertiary source. What kind of source? When you are publishing your article in a research journal, what kind of sources it is? You are publishing a paper on the basis of what? Please remember, we are not talking about your review of article. We are talking about the research journal article. So 57% are saying it's a primary source, and correct answer is also the same. Okay, it's a primary. The paper that you are publishing is based on what? The primary sources. Second question. Okay, leaderboard is there, which shows a time limit. Within a time limit, you are given the answer. Next question. The benefit of using a citation and appropriate styles are: you avoid the charge of plagiarism, you are providing the hard evidence or expert witness to support your argument, you let your leader know that you are working within the academic tradition, you let your reader know that you are working within an academic tradition, or all of the above. What are the
advantages of citation, and appropriate style. Please remember all these points we are going to discuss in our session, nothing to worry. This is just for me. This quiz is only for me to know the levels. So 70% are correct. That is all of the above. For all these reasons, we are following what? A citation. Good. There is a change in leaderboard. Next. The reference list is arranged in the order in which the resources are cited in your assignment. The reference list is arranged in the order in which the resources are cited in your assignment. True, false, or it depends upon style. The order of the references. What kind of order you are following? So 56% are correct. Okay, it depends upon what style that you are following. We will see all these things. Good. There is again change. The personal communication such as email and telephone calls are not included in the reference list. True or false? The personal communication such as email and telephone calls cannot be a part of your reference list. True or false? So actually, you can include the email as well as telephone calls in your reference list. How to do it, we will discuss. Okay. Next, what abbreviation is used to mention more than 4 authors of a research work to be cited? If there were more than 4 authors, then what kind of abbreviation one is followed? ATAL, ETAL, ETAL, OTAL. If there are more than 4 authors while citing, what kind of abbreviation you are following? So 74% are correct. It's the ETAL. Good. Next. In referencing, what does abbreviation PP stand for? In referencing, what does abbreviation PP stand for? Whether it is a page or paper or paragraph or pages. In referencing, what does abbreviation PP stand for? So 54% are correct. It's a pages. Okay. And if it is single P, in that case, it is referred as what? Page. Double PP represent pages. Good. Going. When accessing the internet, which of the following step is most essential? Recording the full URL, that is uniform resource locator. Noting the access date when you are accessing that particular site. Downloading the material to be referenced, or all of the above. What is essential? Whenever you are accessing the internet. So all of the above is the correct answer. 84% people. You need to record all these things. According to you, how many different type of sources that one can include in thesis or research paper? Different types of sources that you can include in your thesis or research paper. In between 1 to 5, in between 6 to 15, or greater than 15. I hope that you understood the meaning of sources. It may be book, journal, paper, okay, articles, newspaper, etc. So 48% people are correct. It is greater than 15. Good change. The bibliography usually provides dash to information. The bibliography usually provides dash to information. Reference in the bibliography. Okay. Multiple access point, single access point, double access point, or all of the above. Using a bibliography reference, you are able to access how many different sources. So correct answer is B, that is single access point. Using a single reference, you are able to access only single source. And okay, what is missing from this annotated bibliography entry? What is missing from this annotated bibliography entry? The reference has been given over here.
So what is missing? The title of the book, the annotation, the publisher or author name, and year of book published. What is missing in this annotated bibliography? I hope that you know the meaning of annotated bibliography. If it is no, we will discuss. Don't worry. It's a new concept, annotated bibliography. So what is missing here is the annotation itself. Okay, the annotation means what? The summary of the paper. The annotation means simply a summary of the paper. So how to give the summary of the paper, we will discuss during the session. Nothing to worry. Probably the last question. You change a few words in a passage and replace them with your own, and for that reason, you need not cite. True or false? You change a few words in a passage and replace them with your own, and for that reason, you need not cite. So correct answer is false. Okay, you need to cite whenever you are copying any information and making certain cosmetic changes or few changes. Okay, you need to cite the original author. The correct answer is what? It's a false. You need to cite. Last question probably. Entries in the reference list should be placed in alphabetical order. True or false? We have already seen this question. True or false? So it is basically depends upon what style, as we have already seen. It depends upon what style. So it is not necessary. For example, when you are talking about IEEE, in IEEE you are not specifying in the specific order of the sources. Now, our quiz is over. Now, question is, have you ever used any tool for generating the citation and bibliography? Have you ever used any tools? Then the changes. Okay, so we can say that almost 50-50 is there. Okay. Okay, no issue. Let us start with our session. So, what is research? Any one of you, please unmute yourself and give an answer. What is research? There are a number of definitions, no issues. Any one of you, please. Good morning, sir. Yes, yes, Dr. Mohammed, please. Research, that is just finding something new from the reference point of view. Okay, good. Any other? So research is an innovation process in which we develop some new products, services, as well as new procedures, industrial procedures, which are unique in their development process, as well as they are green and sustainable for future. Thank you. Hello. Yes, Hello. Doctor. Sir, research is a systematic investigation. Okay, good. Thank you, madam. In order to establish facts and something new conclusions. That's good, madam. Dr. Ramesh Kumar, want to say something? Very good morning, sir. As per me, what I understood, research is to search something again and again. When we get a solution, and then we are not supposed to stop there. We have to go for the innovation and finding the new solution again. That is what research means. Okay, that's good. So all of you are correct. Okay, now mute yourself, all of you, please. So what is research? Being a teacher of computer, okay, I always say it's the IPO, called as input, process, and output. Okay. So research is what? Simply a collection of and evaluation of an information about topic of your research work of a certain discipline or subject domain and produce a new and relevant information. Okay. Basically what you are doing, you are collecting certain information and then you are doing analyzing. Okay. So method of analyze may be a differ from subject to subject or discipline to discipline. But ultimate goal is what? To come out with a certain new relevant information.
That is what the basic goal. Okay. So it means we can say that the overall purpose of any research is to what generate a new concept, which should be simple to access and providing a better alternative over a previous one. That is the basic thing. For example, watch see this what we can say that image. Okay. Observe that it is basically a small watch, or we can also call smart watch. Okay, and it have a many features. We have already used a watch, no doubt, but it contains what a many features. So adding such new feature is also a what research. Now, what is the important part? Once you have finished your entire work of doing a research, the most important part is what research report writing. So once you have finished your experimental or analysis of work of research, the next important step is what research report writing. Now you may write here in the form of thesis or dissertation, or converting your research work in a form of what certain academic book, or writing simply a research paper. Okay, these are some of the most important part that one usually do after performing his experimental work. So what are the important parts of the research report writing? So there are many. Okay, like all of you are aware about this format. Like you may have a title, abstract, keyword, etc., etc. Okay, there are many things, but most of the times we come across with the following points. What is the creation of table of content? Usually, when we are talking about what, when you are creating a thesis or when you are writing a certain dissertation, in that case, you need to create what a table of contents, then a list of figures. Okay, it might be possible that in your work you may have a number of tables or a number of figures or a number of equations, and you want to create a list at the end. Then creation of citation and generating the bibliography. Okay, you would like to create a citation and reference list at the end. So performing all this activity manually is very difficult. Performing all this activity manually is very difficult, and we have a solution. That is what tools. Okay, so we are going to discuss now in the first part. In the first part, we are going to see how to generate a table of contents, how to insert a figure. Now, when you are downloading certain figure, you usually worry about what a plagiarism or copyright. Okay, any one of you, please, any one of you, simply unmute. जब आप पिक्चर अगर आपको चाहिए रहेगी तो आप कौन सी मेथड फॉलो करते हैं? Any one of you? Sir, I am using Turnitin software for removing the copying any content of any article. Okay. Normal. Suppose if you want to download certain images, in that case, if you want to download certain images, in that case, आप अभी कैप्टन निकालिएगा कितने देर में? बस अच्छा ये निकाल के बस केवल kindly mute. If you want to download certain images, what is the procedure that you are following? Mobile items. Sir, we can't download any copyright images. We can download only those images which are not copyrighted. Okay, so it is very difficult to know for many of the people to know whether the images that you are going to download, whether it comes under the copyright or not. Sir, okay. I have a question, sir, if you don't mind. Sorry to intervene. Please, Mr. We can download the copyright image asking or citing their name or their permission. In a way that would give a good cross-reference. Okay, that is the one way. It means you need to have the permission. Okay, there is another way we will discuss. Okay, that is what a Creative Commons, which comes under the open education resources. The images that comes under the open education resources. We will discuss those parts during our practical session. Okay, how to download those. And finally, we will see how to generate a table of figures. Okay, now it's time to start a practical session. So I am following MS Word for this. I am using a tool called as MS Word, which all of you are familiar. Okay, now here what we need a certain text. Okay, now one way is what to write entire text, and second one is to generate the text. So random function is basically useful to generate a sample text. Random function is useful to generate a sample text. See how to write equal sign, then random, followed by within a bracket parameter. So this parameter 3 indicates we want 3 paragraphs. If you are written 4, in that case it is going to generate a 4 paragraph and so on. Okay, so enter. So it
has generated a 3 paragraphs. Clear this part to all of you? Using a random function, we are able to generate a sample text. Now I am assuming this is your research paper. Is that clear to all of you? Let me revise once again. क्या करना है आपको? Equal to random. अगर आपको 5 पैराग्राफ चाहिए तो 5 लिखेंगे, तो ये 5 पैराग्राफ बनेगा. Okay, it's very simple. Once again, let's see. RAND followed by. You can use this function in 2007 onward MS Word. मैं इसको थोड़ी साइज बड़ी कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें. कैसे लिखना? Equal to. Okay, and then random function. So this function will generate what? The sample text. So press enter key. So it has generated what? A 3 paragraphs. Now here I would like to have what? Now assume this is my chapter 1. My chapter 2. Chapter 3. यहाँ तक क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई भी एक दो जन अनम्यूट करके रह सकते मेरे साथ. Okay, now see. Select this chapter 1 and now here in the home tab we have what here heading 1. Click on this. Similarly, we are going to create what? A table of chapters. We are creating here a table of chapters. Again, okay. At the end, आपको क्या करना है? At the end, कर्सर यहाँ पे रख दिए and रेफरेंस में जाके सिंपली रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक कीजिए and your table of content is ready. Now assume कि अगर आपका पेज अगर चेंज हो गया होगा, कंट्रोल एंटर मार के मैं नेक्स्ट पेज पे गया. सिमिलरली यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर ना मार रहा हूँ. अगर पेज चेंज हो गया तो ये टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप चेंज होगा क्या? नो. व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू अपडेट इट. हाउ टू डू इट? अगेन सिलेक्ट इट एंड अपडेट द टेबल. अपडेट व्हाट? पेज नंबर ओनली. ऑब्जर्व. Clear this part, all of you? Shall I repeat? Hello? Yes, sir. Shall I repeat or continue? Repeat, Yes, sir. Please repeat, repeat. sir. Please repeat, sir. Yes, please. Okay. What you need to do? देखिए एक बार मैं फिर से पूरा कर रहा हूँ. Assuming that कि आपके चैप्टर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. Okay, it might be on any page. Nothing to worry. ये आपका पहला पेज हो सकता है, या आपका 25th पेज हो सकता है, या आपका 30th पेज हो सकता है. Nothing to worry. कहीं पे भी रह सकते हैं. आपको करना क्या है? जब आपको at the end table of chapters बनाने का है तब आपको करना क्या है? Simply select the chapter. Okay, home tab में गए और यहाँ पे आपका स्टाइल है. स्टाइल में आप क्या करेंगे? हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे. Similarly, second chapter को heading 1. Similarly, third chapter को भी आप क्या करेंगे? heading 1 करेंगे. That's all. Then at the beginning, जहाँ पे आपको चाहिए list of table, वहाँ पे कर्सर रखेंगे and then finally reference मेनू में जाके table of content के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे automatic table. That's all. ये आपका table of content तैयार. Clear यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now एक मिनट. अब इसके अंदर अगर सब सेक्शन भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इंट्रोडक्शन 1.1. ठीक है. यहाँ पे चैप्टर 2 का भी दे रहा हूं मैं. Yes, sir. 2.1 सपोज हेडर. ऐसा कुछ तो भी किया मैंने. अब मुझे ये क्या चाहिए? ये भी मुझे चाहिए इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर. तो कैसे लेंगे? देखो इसको सिलेक्ट करो अभी और होम टैब में जाके हेडिंग 2. देखिए ये हमारा हेडिंग 1 था, ये हमारा हेडिंग 2 रहेगा. सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करेंगे हम हेडिंग 2. एट द एंड हमको क्या करना पड़ेगा? इसको अपडेट करना पड़ेगा. तो कैसे करें? देखिए फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लो
अपडेट टेबल बोल दीजिए, अपडेट एंटायर टेबल, एंड देखिए अपने आप ये आ गया। क्लियर ये पार्ट? यस सर। अब इसके अंदर और भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कितने भी सेक्शंस हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उतने ही है। 1.1.1 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया वीडियो नाम का है सब वीडियो। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मुझे बताएंगे आपका इसका स्टाइल क्या रहेगा, हेडिंग 1 रहेगा कि हेडिंग 2 रहेगा कि हेडिंग 3 रहेगा, क्या रहेगा? 3 रहेगा। ये हेडिंग 1 था हमारा, ये हेडिंग 2 रहेगा, तो ये क्या रहेगा? हेडिंग 3। हेडिंग Okay, 3 it will be heading 3. Good. Okay. एक मिनट, हेडिंग 3. ओके, और लास्ट में फिर से हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अपडेट टेबल. So you can create such kind of table automatically. Okay. एडवांटेज क्या है इसका, सपोज अगर पेज नंबर चेंज भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि हमारा पूरा इंडेक्स करने के बाद हमको लगता है कि हमको कुछ और ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, मैन्युअली अगर आप करेंगे तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, उतना सारा पेज नंबर चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा. तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपडेट टेबल बोल दीजिए, देखिए अपने आप पेज नंबर यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो गया. क्लियर? Okay, so Yes, this sir. is how we are able to create what? A table of content. Now we are going to discuss here how to create, insert the images, okay, without a copyright. So under the insert tab में जाएंगे, यहाँ पे क्या पिक्चर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दिस डिवाइस और सेकंड है ऑनलाइन पिक्चर. दिस डिवाइस मतलब हमारे डेस्कटॉप में जो भी होगा, हमारे लैपटॉप में जो भी होगा, या फिर आप डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, या फिर आपका जो भी डिवाइस होगा, मतलब लोकल इसमें. तो अगर आपको वहां से पिक्चर चाहिए तो वहां से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन से भी ले सकते हैं. तो अपन क्या करेंगे, ऑनलाइन से स्टार्ट करेंगे. Now by default, taking the time. यहाँ पे हम एक पिक्चर ले लेंगे, सपोज हमको चाहिए कुछ कॉलेज से रिलेटेड. तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएटिव कॉमन्स ओनली, मतलब जो कॉपीराइटेड नहीं है ऐसे ही पिक्चर यहाँ पे हमको दिखाओ, जो कॉपीराइट नहीं है. Taking the time, just wait. तो सपोज मुझे चाहिए ये पिक्चर चाहिए, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट अंडर अ कॉपीराइट. इट मींस यू आर able to use this picture for your purpose because it comes under what, open resources, open education resource के अंदर ये पिक्चर आ रहा है. So now I am simply resizing it. ओके, और एक पिक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं चैप्टर 2 के बाद. ये मैं नॉर्मल लेता हूँ, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे जो भी होगा. लाइक आई अर्लियर सेड, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऑनलाइन ही हो. ओके, अब हम यहाँ पे आप कैप्शन देते हो, तो कैप्शन कैसे देते हो आप, मैन्युअली देते हो मोस्ट ऑफ यू. मतलब क्या करते हैं आप, फिगर 1 and then suppose SG college. This is the way that you are giving a caption. Okay, don't ever use this technique. Don't ever use this technique. The reason is very simple. I will let you know what is the reason for that purpose. So what kind of method you need to follow, कैसे देना है. तो हम जा रहे हैं रेफरेंसेस में. रेफरेंस में है यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन. ओके, अंडर द रेफरेंस हमको क्या देना है, इसको कैप्शन देना है, इस इमेज को इंसर्ट कैप्शन. तो आपको कैप्शन में क्या चाहिए, फिगर 1 चाहिए कि
टेबल चाहिए कि कुछ और चाहिए? आपको लगता है कि फिगर नहीं, मुझे चाहिए नाम, इमेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं खुद का, न्यू लेबल इमेज। ओके, तो इमेज आ गया। तो इमेज क्या, इमेज का नाम क्या दे रहे हैं आप? एसपी कॉलेज। ओके, तो ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे? सेम। प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू कैप्शन, रेफरेंस मेनू में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन, एंड इमेज 2 यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, आरपीई, रिसर्च पब्लिकेशन इथिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज एट द एंड जब आपके पूरे फिगर्स हो जाएंगे, पूरे फिगर्स आपके ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ फिगर्स, हेडिंग। और देखिए इसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। क्लिक ऑन दिस। आई एम कीपिंग ऑल दिस डिफॉल्ट वैल्यूज, जितने भी डिफॉल्ट वैल्यूज उसको एज इट इज रख रहा हूं मैं, और ओके कर रहा हूं। ये हो गया आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स तैयार। व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है अभी आपके पास, देखिए वन बाय वन। अज्यूम करो कि सपोज आपको डायरेक्टली फिगर नंबर 2 पे जाना है, तो वन वे इज व्हाट? स्क्रॉल करो। लेकिन अज्यूम करो आपको फिगर नंबर 70 पे जाना है, तो इज इट पॉसिबल टू नो कि उसका फिगर पेज नंबर कहां पे है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो हियर व्हाट इज द एडवांटेज? आप यहां पे कंट्रोल कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और फिर माउस पे क्लिक करेंगे, तो अपने आप कहां जाएगा? उस फिगर पे जाएगा। देखिए एक बार फिर से, सपोज मुझे इस फिगर पे जाना है, क्लिक, इज द वन एडवांटेज। ओके, सेकंड एडवांटेज, अज्यूम करो कि आपके इसमें टोटल 70 पिक्चर्स है और आपको फिर से एक नया पिक्चर इंसर्ट करना है एट द बिगनिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू रीअरेंज ऑल द नंबर्स वन बाय वन। You need to arrange all the numbers one by one, which is a very difficult task. Am I right? Am I right? अगर आपको बताया गया कि यहाँ पे एक और पिक्चर इंसर्ट करना है, तो आपको मैन्युअली हर एक क्या करना पड़ेगा? नंबर चेंज करना पड़ेगा, so which is very time consuming job. Now see how it is easy. I'm adding one more picture over here. Insert again using the online mode. Okay, suppose say apple. Insert. Now please remember this images आपका टेबल भी हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकता है, वो भी बताऊंगा मैं विद इन अ मोमेंट। नाउ सिंपली रिसाइज इट। देखिए यहाँ पे अपने आप आ गया है, it is under what? CC by NC. It means it comes under what? A copyright. So you can use it without any worry. Finally, देखिए अब यहाँ पे ये क्या है? इमेज नंबर 2 है। अभी मेरा नया इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो इसका नंबर क्या देना है मुझे? इमेज 2 देना है। तो ये अपने आप चेंज होता है कि नहीं होता है, देखना है आपको। तो कर्सर यहाँ पे रखिए हमने, रेफरेंसेस में गए, इंसर्ट कैप्शन, डोंट फॉरगेट इंसर्ट कैप्शन, नंबर 2 अपने आप आ गया है, एप्पल, एंड नाउ प्रेस ओके। अपने आप देखिए इसका नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे तो चेंज हो गया, लेकिन टेबल में चेंज हुआ क्या? नो, टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको अपडेट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लो पूरा, और यहाँ पे देखिए क्या है? अपडेट टेबल। सिलेक्ट कर लीजिए और अपडेट टेबल बोल दीजिए, अपडेट एंटायर टेबल, और देखिए अपने आप ये तीनों पिक्चर आ गए। इट्स सो इजी। एनी डाउट्स यहाँ तक? No, sir. Good, thank you. Okay, so in this way you can add the images very easily. Now similarly table का भी वही हाल है। For example, मैं यहाँ पे एक टेबल मुझे चाहिए, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ टेबल, सपोज से 2 by 2, 1 by 1, और इसका मुझे हेडिंग देना है, तो हेडिंग मैं मैन्युअली दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज से टेबल, कैप्शन दे रहा हूँ इसका, ABC नाम का कोई कैप्शन है। ओके, कर्सर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, जस्ट मोमेंट, रेफरेंसेस में गए, फिर से इंसर्ट व्हाट? कैप्शन। तो ये क्या है मेरा? लेबल क्या है मेरा? ये टेबल है। प्लीज रिमेंबर दिस इज माय टेबल। मैं सिंपली प्रेस कर रहा हूँ ओके, टेबल आ गया यहाँ पे। और एक टेबल ले लेते हैं हम यहाँ पे, इंसर्ट टेबल, सपोज ये साइज का,
फिर से यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं हम, रेफरेंसेस में गए, इंसर्ट कैप्शन, टेबल आ गया, सिंपली प्रेस ओके। ओके, एट द एंड हमको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ टेबल्स, नथिंग, कर्सर रखिए वहां पे जहां पे आपको चाहिए, एंड फाइनली इंसर्ट व्हाट, टेबल ऑफ, क्या चाहिए हमको यहाँ पे, टेबल चाहिए। देखिए बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया क्योंकि हम टेबल पे काम कर सकते हैं इसलिए। तो आप क्या ले सकते हैं, अगर इक्वेशन होगा तो आप क्या लेंगे, इक्वेशन लेंगे, फिगर होगा तो फिगर, इमेज होगा तो इमेज, टेबल होगा तो टेबल, एंड फाइनली प्रिंट ओके, दैट्स ऑल। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हेडिंग क्यों नहीं है, कैप्शन क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप आ गया था, यहाँ पे हमने क्या किए थे, मैन्युअली लिखे थे लिस्ट ऑफ फिगर, इफ यू रिमेंबर वी आर रिटन इट मैन्युअली। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको क्या पड़ेगा, मैन्युअली लिखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ टेबल्स। व्हाई सो, बता सकते कोई? Because using this table only, using this option only, we are inserting what, a table as well as equation as well as figure, and that's why you need to give the heading manually. Clear to all of you? Pretty cool, like clear. So this part is clear to all of you. यहाँ तक clear है सभी को? Yes, sir, it is clear. Okay, now we are moving to our next part. That is creation of citation and generating a reference list automatically using MS Word. Okay, let's see. Why we are generating a citation? Okay, why we are writing the references? May I know what is the purpose of writing the references at the end? हम references क्यों लिखते हैं at the end? क्योंकि आपने ही पढ़ा है, आपने ही लिख रहे हैं और आप ही लिख रहे हैं, तो references देने की जरूरत क्या है? Yes, any one of you, please. Why we are writing the references at the end of thesis or research paper? What is the basic reason? Yes, please, all of you. Any one of you? Okay, no issue. So basically, we are giving the references at the end to let other people know the kind of book that you have followed, the kind of paper that you have followed, the kind of mechanism that you have followed while doing your research work. Okay, so basically, we are giving the references for readers to know the kind of material that you have followed while writing or while doing your work. Okay, with what? It is simply a list of sources usually placed at the end of research paper or thesis or book or report or even during your presentation also. Okay, that helps you to know the kind of sources that you have cited or consulted. For that purpose, it is necessary to write what? A bibliography. So you are specifying what? You are specifying the sources of information. So what is my source of information? We will discuss it in a moment. So citation means what here? Acknowledging the author work. You are giving the acknowledge to an original author whose work you have copied. Okay, that is what nothing but the citation. So in the citation, you are providing what? The details of sources like the full title of the research paper or full title of the research paper or thesis or author name, then where you have published, the date of publication, etc. So these are some of the information that usually you provide at the end of references. So references shows the kind of hard work or quality work that has been put by the author, and now to protect the plagiarism, to protect your work against the plagiarism, for that purpose it is necessary that you should give a citation. Now how to give the citation, we will discuss it in a moment. So again, now assume that when you are doing a research, what you are doing, आप क्या करते हैं, एक रिसर्च पेपर को डाउनलोड करते हैं, दूसरे पेपर को डाउनलोड करते हैं, तीसरे पेपर को डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे पेपर आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करते हैं क्या? When you are downloading certain research paper, are you maintaining the information
from which place you have downloaded? Most of us know. Most of us know. Okay. So how to do it? So how it is easy to do it, we will discuss again during our practical session. Now, MS Word facilitates you to create the citation and generate the bibliography. Now, why I have selected here MS Word? Yes, most of you are aware about MS Word only. There are a number of tools are there for generating the citation and generating the bibliography. So here I have selected MS Word, as most of you are aware about this tool, MS Word, but probably we are not explored it as. Now, before that, what is the difference between reference and bibliography? References means those sources that we have consulted, those we have cited while writing our work. Those sources that we have cited during our work. मतलब उनकी इंफॉर्मेशन हमने कॉपी और पेस्ट किया अपने वर्क में भी. Okay, those are nothing but what? References. While bibliography is what? It is simply an additional references or additional books or sources that you have followed, but you have not copied those information in your work. That is what bibliography. So we can also say that reference is what? It is nothing but simply a subset of bibliography. Reference is nothing but simply what? A subset of bibliography. Okay. Now, in India, we usually call it reference list, while in foreign days, refer it as work cited. हम usually क्या बोलते हैं उसको reference list बोलते हैं. In foreign university, they are calling it what? Work cited. Now, there is another new concept that is what? Annotated bibliography. And it is compulsory from now onward. Probably UGC is going to make it compulsory by the end of this year to have an annotated bibliography in your thesis only, not in research paper, in your thesis only. Because while writing a thesis, you may refer 30 or 40 research paper, but what is the feature of that paper, you only know. उस पेपर की खासियत क्या है ये खाली आपको मालूम है. Because you have consulted those papers, because you have cited those papers. Now, since your readers are reading or your readers are following your work, if they wish to know what is the importance of that particular research paper, they should come to know about that. And for that purpose, it is necessary that you should write a summary after your reference. And this is nothing but what? Annotated bibliography. So how to give this annotated bibliography? Let us see. Assume that this is what? A reference. Okay, and followed by what you are doing? You are giving a summary. Now, this summary should be usually around 150 words. It means now how to give. जब आप references लिखेंगे तो कैसे देना आपको? देखिए, ये आपका work cited, उसके बाद आपने क्या लिखे? ये आपका reference, उसके बाद आपने summary. ये आपका reference, उसके बाद summary. ये आपका reference, उसके बाद summary. In this way, you need to write what? Your annotated bibliography. Let me once again repeat. The annotated bibliography is only necessary in writing a thesis, but not in research paper. Okay, and UGC is going to make it mandatory, probably in the current meeting. So remember the technique that you need to follow. Reference लिखना है, उसके बाद उसका summary लिखना है. Okay, और इसको बोलते हैं हम annotated bibliography. Now, may I know कि कितने references रहने चाहिए usually in your research thesis? Any one of you, please. I have seen बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे FTP में. So may I know how many references should be there? Sir, that depends on the article that we are giving. No, we are talking about thesis. Thesis की बात कर रहे हैं. Article नहीं, research paper नहीं. Usually thesis में कितने रहते हैं? Usually. I think 100 is enough, sir. 100 is enough. Okay. 100 से कम रहा तो नहीं होगा. Sir, there is no limit in kind of number. No, we are talking about minimum. We are talking about minimum. Maximum की कोई limit नहीं है. Maximum की कोई limit नहीं. Minimum कितना? Usually आपको guide आपको बताते हैं कि 30 रहना चाहिए, 40 रहना चाहिए, 20 रहना चाहिए, something like that. Okay? उसके बिना काम नहीं होगा. Is it true or not? Some 60 to 70 references related to the work. Of course, it is related to work, no doubt. But my question is minimum. I'm asking about minimum. I'm not talking about maximum. Is it 3 to 4, sir? 5. This is 5. 3 to 5 you can say is fine. Okay, 5. We are talking about thesis, not research paper. We are not talking about research paper. Okay, we are talking about the thesis. Let us see. Sir, 50.
Okay, let us see. Okay, let us see. Sir, shall we select latest papers or? See, there were only two references. One was self paper and other one is what? A great John 1 new paper used by John P. Nash during his PhD thesis. There were only two references. एक क्या था? खुद का self paper था. और second किसका था? Great John 1 Newman, the father of modern computer, who has discovered the concept of storage concept. Okay. So there are only two references in John P. Nash, and for his work, he got a Nobel Prize. He got a Nobel Prize. And his entire thesis is just consists of only 28 pages. And now we are talking about minimum 200 pages, 150 pages, 250 pages, something like that. Okay, just his entire PhD it consists of only 28 pages, and there are only two references. One was एक खुद का पेपर था जो पब्लिश हुआ था, वो उन्होंने रेफरेंस दिया था, और एक उसका जॉन वन न्यूमैन था. Okay, so remember this part. Now, what kind of references or style that you need to follow? Let us see. There are a number of styles are there: APA, MLA, IEEE, ISO, Harvard, Chicago. In fact, there are more than 4,000 styles are there. More than 4,000 styles are there. Now, question arises: which style I should follow, or shall I use mix one? Yes. So, yes, madam, please. IEEE, sir, yes, Anita madam. So it depends on the if I am writing the research paper, it depends on the research general which I am sending my research paper, or if I am doing it for my PhD thesis, it depends on the university from which I am doing my research. I agree with you. Okay. Yes, Pankaj sir. Would like to add something extra? Sir, it depends on the guidelines given by the concerning publisher, given by the concerning company, publishing company, or by the university from which we are pursuing our research degree. Okay, that's good. I hope that many of you have done a doctorate, and many of are not aware about the kind of references. I don't think that any university is giving any kind of suggestion. If your subject is art, कि भाई आपने कौन सा रेफरेंस फॉलो करना है. If your subject is commerce, कि आपने कौन सा स्टाइल फॉलो करना है. I don't think any university is giving such kind of guideline. Okay, so let us see. I'm going to discuss all the things. Don't worry. So basically, this is the usual format of what you are referencing. Okay, उसमें author का नाम रहेगा, publication का नाम, etc. URL, uniform source of title of website, and date of access. Okay. So now question arises: which style I should follow for my subject? Which style I should follow for my subject or faculty? As all of you are aware, there are only 4 faculties. Okay. What are those? Science and technology, commerce and management, humanities, and interdisciplinary studies. These are the 4 faculties. And under these faculties, we have what? Various subjects. So like APA, education science. Okay. For example, if you are doing if you are a student of behavioral science or psychology or cognitive or neuroscience, so in that case, you should follow what? APA. If you are a student of literature or languages, you should follow what? MLA. If you are a student of technical fields, in that case, you should follow what? IEEE. And like I earlier said that there are more than 4,000 styles are there, and every day new one is coming. Every day new one is coming. Earlier, a computer science student used to follow IEEE, but now they need to follow what? ACM format. Okay. Then for the commerce and management, they have what? Chicago. Now, like earlier said, social science, कौन सा use करते थे पहले? APA. Now they need to follow what? Harvard. So remembering this is very difficult. Of course, you should. अगर आपके गाइड को मालूम होगा और आपको गाइड ने आपको बताया कि ये स्टाइल फॉलो करना है, that's good. But if you don't know and आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर आपको नहीं बताया, तो you should follow this table. Okay, please remember, यूनिवर्सिटी कभी आपको बताती नहीं, सब्जेक्ट वाइज कोई भी नहीं बताता आपको. Okay, सब्जेक्ट वाइज आपको कोई भी नहीं बताता. हाँ, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो जनरली पब्लिशर्स आपको बताते हैं कि कौन से फॉर्मेट में आपको पेपर पब्लिश करना है, कौन से पेपर में आपको पेपर सबमिट करना है. Okay, but university not, subject wise not. Now, what are the different type of sources? So, like I earlier said, there are more than 15. So, what are the different sources? Let us see. It may be books, it may be
book section, it may be article in periodical, it may be conference proceeding and report, website, art, performance. आपको कोई फिल्म देख के कुछ आइडिया आ गई, वहां से आपको कुछ नई आइडिया मिली, किसी का इंटरव्यू सुनने के बाद आपको कुछ आइडिया आई है, तो दैट कैन बी ऑल्सो अ सोर्सेस. ओके, पेटेंट होगा, केस होगा, ईमेल होगा. ओके, नाउ यस सर, क्या रह सकते हैं आपके सोर्सेस हो सकते हैं. Simply, usually we do what? हम जनरली क्या करते हैं, बुक और जनरल पेपर ही लेते हैं, but you can also have all these sources. Now, we are going to discuss here little bit about IEEE. Under IEEE, अगर आप बुक प्रिंट में छापते हैं तो उसका फॉर्मेट ये रहना चाहिए. The chapter in book होगा तो ये फॉर्मेट रहना चाहिए. देखिए PP stand for what? Pages, 55 to 70 pages. अगर ई बुक होगा तो ये फॉर्मेट, आर्टिकल्स इन जनरल होगा तो ये फॉर्मेट, ई जर्नल्स इन डाटाबेस होगा तो ये फॉर्मेट, and so on. Now question arises, how to remember quotation कहाँ देना है, comma कहाँ देना है, full stop कहाँ देना है. Do you think it's possible to remember all these things? और अगर आपका मिसमैच हो गया तो you may face a problem. Okay. Similarly, अगर आप कॉन्फ्रेंस पेपर में पब्लिश करोगे आपका पेपर तो ये फॉर्मेट रहना चाहिए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होगा तो ये, न्यूज़पेपर होगा तो ये फॉर्मेट, टेक्निकल रिपोर्ट होगा तो ये फॉर्मेट, पेटेंट होगा तो ये फॉर्मेट, थीसिस और डिसर्टेशन होगा तो ये फॉर्मेट में रहना चाहिए आपका रेफरेंसेस. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. सिमिलरली, ईमेल होगा तो ये फॉर्मेट, इंटरव्यू होगा तो, लेटर होगा तो, टेलीफोन कॉल होगा तो उसका फॉर्मेट दिया है यहाँ पे. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्लाइड्स विद यू. ओके, नथिंग टू वरी. सो क्वेश्चन अराइज, हाउ टू रिमेंबर सो मेनी स्टाइल्स. कैसे याद रखेंगे आप? सो व्हाट वी नीड अ टूल. हियर वी नीड अ टूल which will help us to generate the citation and references automatically. So we have many tools like BibMe, EasyBib, Zotero, Mendeley, Paperfile, and MS Word. We are going to follow here MS Word. Okay, since you are very much familiar with MS Word only, that's why, nothing else. So अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, MS Word 2007 या उसके आगे वाले जितने भी वर्जन होंगे उन सब में आप ये यूज कर सकते हैं. ओके, 2007 के पहले का अगर आप MS Word यूज करोगे तो यू कांट यूज दिस फीचर. So it is very easy to create the citations, okay, using these tools. So these are some of the references. Now we are going to move to a practical session. So ये जो भी हमने लिखा था मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और फिर से मैं रैंडम कंटिन्यूस कर रहा हूँ in order to generate certain sample text. Again, remember this random text helps you to generate a sample text, nothing else. And I'm assuming here this is a part of your research paper. Okay. Now, assume कि ये जो information मैंने किसी बुक से कॉपी किया है, किसी बुक से मैंने ये कॉपी किया है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? साइटेशन देना पड़ेगा. तो साइटेशन कैसे दे रहे हैं हम? देखिए, रेफरेंस मेनू में जा रहे हैं और यहाँ पे है इंसर्ट साइटेशन. Insert citation. So simply click on this, add new source. Add a new source. So see how many sources are there. Book section, journal article, conference proceeding, report, and so on. There are many sources are there. So let us start with the book. Okay, who is the author? Say Dr. Title of the book, suppose say year of publication, say 2020, city, suppose say Nagpur, publisher say Dalton. Okay. Now इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सोर्सेस में. तो उसके लिए क्या करना है? शो ऑल बिब्लियोग्राफी. You can give the volume, ISBN number, okay, कौन से दिन आपने उस बुक को एक्सेस किए, ये सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो. तो आई एम सिंपली कीपिंग एज इट इज. ओके बोल रहा हूँ मैं. तो दिस इज द फर्स्ट वन. देखिए अपने आप ही आ गया. ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट APA फॉर्मेट में आ रहा है. APA फॉर्मेट में आ रहा है. ओके, लेट इट बी. मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स. दिस टाइम आई एम टेकिंग व्हाट? सपोज से मूवी लेते हैं हम, फिल्म. ओके, टाइटल ऑफ द मूवी से लगान, डायरेक्टर आशुतोष. ओके, ईयर ऑफ कौन से ईयर में पब्लिश हुई मूवी? 2010. फिर से याद रखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की हम दे सकते हैं यहाँ पे. डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर का नाम क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, फॉरगेट अबाउट दिस. ओके मैं बोल रहा हूँ.
ये अपने आप आ गया। यहाँ तक क्लियर ऑल ऑफ यू? Just any one of you, please. Is that clear? Okay, let me repeat once again. यहाँ पे मैं कर्सर अज्यूम करें कि ये इंफॉर्मेशन हमने कहीं से कॉपी की, फिर से हम क्या करें, इंसर्ट साइटेशन बोल रहे हैं और ऐड न्यू सोर्स। अब मैं ले लेता हूँ सपोज बुक सेक्शन, मतलब अज्यूम करें कि कोई बुक सेक्शन लिखा गया, उसके अंदर बहुत सारे ऑथर्स ने अपने क्या लिखे, चैप्टर्स लिखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मेन ऑथर कौन है, बुक का ऑथर कौन है और ये पेपर का ऑथर कौन है। पेपर का ऑथर सपोज एसबीके, टाइटल है सपोज रिसर्च मेथोडोलॉजी, बुक ऑथर, ओके, बुक ऑथर से डॉक्टर आशीष रेवतकर, बुक टाइटल आर्यम दे देता हूं मैं। बाकी का फिर से इंफॉर्मेशन, मेरा पेजेस कौन सा है, 45 से लेके मेरा 50 में आ गया है और देन फाइनली आई एम क्लिकिंग फॉर ओके। ओके, इस तरह से आपका जितना भी पेपर है, पूरे पेपर में आप साइटेशन देते चलिए। एट द एंड क्या करना है आपको, कर्सर नीचे ले लिए और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी है। तो आपको हेडिंग क्या चाहिए, कैप्शन बिब्लियोग्राफी चाहिए कि रेफरेंसेस चाहिए कि वर्क साइटेड चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फॉरेन ऑथर में वर्क साइटेड लिखते हैं। ओके, सो आई एम क्लिकिंग हियर रेफरेंसेस, मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए आपका रेफरेंस तैयार। इट्स सो इजी। नाउ अज्यूम करते हैं कि ये पेपर आपका एक जर्नल में पब्लिश किए थे एपीए फॉर्मेट में, लेकिन वहां पे पेपर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ और आपको दूसरे जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे फॉर्मेट बोला गया कि आपको IEEE में चाहिए। तो अगर आप मैन्युअली करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे देखिए एपीए की जगह मैं ले रहा हूँ सपोज IEEE, दैट्स ऑल, और ये फॉर्मेट अपने आप चेंज हो गया। कौन से ऑर्डर में आ रही है, 1 2 3, जिस ऑर्डर में आपने साइट किए उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने साइट किए उसी ऑर्डर में आ रहा है। जबकि पहले देखिए एपीए में क्या हो रहा था, एपीए में क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप मैन्युअली करते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट मैनेजिंग करना, उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना। ओके, हियर सच काइंड ऑफ टूल्स आर वेरी हेल्पफुल टू यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है? नो सर। ओके गुड। एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, मैं और एक फंक्शन बना लेता हूँ, रैंडम फंक्शन से पैराग्राफ बना लेता हूँ। RAND, एक ही चाहिए मुझे पैराग्राफ। ओके, एक ही पैराग्राफ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, मैंने ये इंफॉर्मेशन भी इसी बुक से कॉपी की है, इसी बुक से मैंने कॉपी की है, तो मुझे फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे SBK, दैट्स ऑल, क्योंकि आप एक ही बुक से कितने भी बार इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो रेफरेंस में तो एक ही एंट्री रहेंगी, लेकिन साइटेशन एक से ज्यादा रह सकते हैं। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ना, और एक चीज करेंगे हम कि अभी हम नेट से कुछ तो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्लेगरिज्म भी, प्लेगरिज्म का भी पार्ट आने वाला है, डोंट वरी। प्लेगरिज्म कैसे 100% प्लेगरिज्म होगा तो उसको 0% कैसे करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा विद इन अ मोमेंट। बिफोर दैट, व्हाट इज प्लेगरिज्म? चलो ओके, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी और मेरे वर्ड में पेस्ट कर रहा हूँ। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइटेशन देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे हम, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। बुक सेक्शन है क्या है, यानी ये क्या है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट मतलब एक वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस रह सकते हैं, ठीक है, तो वो है। तो हु इज द ऑथर, लेट अस से ओके, लेट अस से, हाँ, आप मालूम कर सकते हैं कि सपोज ये आपका पेज है, सॉरी, यहाँ पे ऑथर का नाम दिया गया, यहाँ पे कहीं पे चेक करो। यूजुअली ऑथर का नाम कहाँ रहता है, एट द एंड। यूजुअली ऑथर का नाम एट द एंड दिया रहता है, यहाँ पे कहीं ऑथर का नाम दिया है, चेक करो, नहीं दिया है। ओके, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ये, p.org,
p.org. Name of website p.org. Same. ईयर कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? देखो ईयर क्या लिखा रहा है यहाँ पे 2017 में 2017 मंथ 5 डे 17। अब कौन से दिन? यूआरएल देखिए इसका क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ये आपका यूआरएल। इसको कॉपी कर रहे हो, पेस्ट, क्लियर एंड फाइनली ओके। अब मुझे इसको क्या पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये बाद में ऐड की है, तो मुझे इसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट बोल दो, दैट्स ऑल। देखिए यहाँ पे अपने आप आ गया। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे ब्रैकेट कहाँ देना है, कोटेशन कहाँ देना है, सेमीकोलन कहाँ देना है, ये सब मुझे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड चीज, प्लेगरिज्म के लिए आपको मैं स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं किसी साइट से, असुम करते हैं कि इस साइट से आपने कॉपी की है। अब इनका कौन सा फॉर्मेट है आपको मालूम नहीं रहता यूजुअली। हो सकता है कि इन्होंने जो साइटेशन किया होगा वो एपीए फॉर्मेट में होगा, दूसरे आप किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो सकता है कि वो IEEE फॉर्मेट में होगा। आप सिंपली क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर लेते हो अपने इसमें एज इट इज। तो डोंट फॉरगेट टू चेंज द स्टाइल, आपके स्टाइल के हिसाब से उसको ला लीजिए, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। ओके, देयर शुड बी सिंपल यूनिक स्टाइल इन योर एंटायर थीसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह आपने एपीए यूज किया, एक जगह IEEE यूज किया, मतलब चैप्टर वाइज आप चेंज कर रहे हैं। डोंट एवर डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। Okay, so that is what how to give a citation and how to generate what references. So I hope that this part is clear to all of you. Now, assume that you are writing a new paper. So obviously, आपने पिछले बार जो सोर्सेस यूज किए थे उसमें से एक दो सोर्सेस यहाँ पे भी यूज करेंगे, तो फिर से मुझे ऐड न्यू सोर्स करने की कोई जरूरत है क्या? तो आंसर इज नो। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, रेफरेंसेस में गए, यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन मैनेज सोर्सेस। मैनेज सोर्सेस पे क्लिक कीजिए और आपने जो भी पहले यूज किए होंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए कॉपी कर रहा हूं मैं, देन ये वाला पेपर मैंने यूज किया था, इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूं क्योंकि मुझे सेकंड पेपर में भी ये चाहिए। ओके, क्लोज कर दीजिए। फिर से हम सैंपल टेक्स्ट बनाएंगे यहाँ पे रैंडम। प्लीज रिमेंबर हम कितने भी टेक्स्ट बना सकते हैं। सपोज मुझे 50 पैराग्राफ चाहिए तो 50 पैराग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी पैराग्राफ है, देयर इज नो लिमिट हाउ मेनी पैराग्राफ यू कैन हैव। सो एट द एंड यहाँ पे हम क्या करें, फिर से इंसर्ट साइटेशन। देखिए दो ऑलरेडी तैयार मेरे पास। ओके, अगर आपको और नए ऐड करना हो तो आप क्या करते हैं, अगर आपको और ऐड करना हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली इसको क्लिक कीजिए, दैट्स ऑल। ओके, सो इट मींस आपने अगर एक बार सोर्सेस ऐड किए तो आपके वो डिक्शनरी मतलब डेटाबेस में स्टोर रहेगा, आप उसको जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हो। दैट इज व्हाट द बेसिक आइडिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, no? Yes, sir. Okay, good. Now, finally, we will discuss about the plagiarism part. Okay, assume that this is one of the parts that you have copied. What is plagiarism? Basically, copying and pasting someone else's work without giving them acknowledgement and saying it's my own work. किसी की इंफॉर्मेशन कॉपी और पेस्ट करना अपने इसमें, उनको बिना एक्नॉलेजमेंट दिए और ये कहना कि वो वर्क जो भी हमने लिखा है वो मेरा खुद का है। दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ प्लेगरिज्म। ओके, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको टूल के बारे में बताऊंगा, ज्यादा थ्योरी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट मच मोर अबाउट थ्योरी, सिंपली वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाट प्रैक्टिकल अप्रोच ओनली। सो देयर आर n number of tools are available for plagiarism. Okay, so we will discuss the simplest one called as searchenginereport.net. searchenginereport.net. ओके, आपको अगर ढूंढने में तकलीफ होगी तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। क्या करेंगे आप यहाँ पे, प्लेगरिज्म टूल्स, प्लेगरिज्म टेकर भी बोल सकते हैं आप। There are many tools are available. For example, Grammarly is there which helps you. Then expert tools, plagiarism detector, small SEO tools, duplicate checker. So there are many are there. Okay, so we are going to follow what here, searchenginereport.net. Simply click it. So free है तो उसके limitations भी रहेंगे,
Okay, so what is the limitations of this? You can use upload maximum 1500 word. इसका मतलब आपका एक 7 to 8 पेज का आपका पेपर आराम से आप चेक कर सकते हो यूजिंग दिस टूल. Okay, only research paper. Thesis तो possible नहीं है. Okay, using these three tools you are able to take what that much part. Now हम करेंगे क्या? देखिए, यह जो हमने टाइप किया था इसको हम कॉपी करेंगे, हमारा वर्क और उसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट. तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेथड है. या तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आपकी फाइल, या फिर अगर आपके ड्रॉप बॉक्स में होगा तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके गूगल ड्राइव में होगा तो आप यूआरएल दे दो, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो. ओके, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू अपलोड द कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, नथिंग एल्स. ओके, नाउ एट द एंड हियर क्या करना है आपको, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और उसके बाद चेक प्लेगरिज्म. क्योंकि ये फ्री साइट है तो यू में फाइंड एन नंबर ऑफ व्हाट एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल सकते हैं यहाँ पे. तो ये चालू हो रहा है टेकिंग. इट विल टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एंड नाउ ऑब्जर्व क्या रिजल्ट आ रहा है. पहला सेंटेंस फाइल ये चेक कैसे हो रहा है, सेंटेंस मतलब हर एक सेंटेंस को चेक कर रहा है. तो पहला सेंटेंस क्या है, प्लेगराइज. सेकंड सेंटेंस भी प्लेगराइज क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमने खुद के मन से कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे. देखिए रिपोर्ट आते जा रहा है. मैंने जानबूझ के 3 पैराग्राफ रखे, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, नथिंग एल्स, बट मैकेनिज्म इज सेम. ओहो गुड. तो ऑलमोस्ट ऑल 89% क्या होता है, प्लेगराइज है और यूनिक दिखा रहा है 11%. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखिए पहली लाइन पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है. वीडियो बिफोर दैट सॉरी, यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस रिपोर्ट. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को जो आया है इसको डाउनलोड कर सकते हैं. आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन शेयर इट विथ योर गाइड और विथ whomever जिसके साथ आपको शेयर करना है, या आपके कलीग जो भी उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो क्या आ रहा है रिपोर्ट. आफ्टर डाउनलोडिंग आपने कौन से दिन में रिपोर्ट जनरेट हुई है, इसमें कितने वर्ड्स है, कैरेक्टर्स कितने हैं एंड सो ऑन. इसमें कुछ एक्सक्लूडेड किया है, क्या एक्सक्लूडेड क्या है मैं आपको बताता हूँ इस मोमेंट. तो कितने सेंटेंस प्लेगराइज है, क्या है और कहां से है ये, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. देखिए ये क्या बोल रहा है कि इस साइड से एज इट इज पूरा 100% कॉपी की गया है, और इस साइड से बोल रहा है कि वो 50% कॉपी किया गया है, इस साइड से 34% कॉपी किया है. हमने तो कॉपी तो एक ही साइड से किए थे, तो ऐसा क्यों आ रहा है, because the same information has been found in many different sites. Same information has been found in a many different sites, and that's why you are getting this that kind of report. Clear to this? सभी को क्लियर हो गया ये ऐसा क्यों आ रहा है रिपोर्ट, ये 100% यहाँ से लिया है एंड सो ऑन. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे. पहला पॉइंट देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू टू प्रूव योर पॉइंट्स. तो हम यहाँ पे here are many ways to show or highlight your point. One of them is okay. We have changed it. Now let us check it. I am not a robot as usual. Same step, check plagiarism. Let us check कुछ changes हो रहा है क्या. No change at all again. इसका मतलब हमने ये जो चेंजेस किए थे वो फिर से कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट में मिला हुआ है. ये फिर से कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट में मिल गया है.
तो क्वेश्चन आता है कि इतने सारे अगर होंगे कंटेंट तो इसको हम करते कैसे बैठेंगे? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर तो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होंगी तो आप कर लेंगे, अगर आपका नहीं होगा तो फिर कैसे? तो इन दैट केस प्लीज रिमेंबर क्विट मोड नाम का एक टूल है। इट्स अ पैरापेजिंग टूल। ओके, क्या करना क्या आपको? हमने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिए इंफॉर्मेशन, या फिलहाल एक काम करते हैं, पहले 2 पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। प्लैगरिज्म होता कैसे है ये भी देख लेते हैं हम इसके पहले। प्लैगरिज्म कैसे चेक होता है? कंटिन्यूअसली अगर आपके 7 वर्ड के बाद अगर आपके वही कंटिन्यूअस वर्ड अगर आते होंगे तो प्लैगरिज्म हो जाता है। मतलब आपको 7 वर्ड अगर एज इट इज होगा तो जनरली पकड़ता नहीं, लेकिन उसके बाद के भी वर्ड अगर सेम होंगे तो इट विल कंसीडर व्हाट? प्लैगरिज्म। ओके, नाउ दिस टूल्स, ये टूल्स क्या करते हैं? पैराफ्रेज कर डालते हैं, मतलब कंटिन्यूअस 7 वर्ड में कंटिन्यूअस एज इट इज रखता ही नहीं, उसको चेंजेस कर डालता है बाय मींस ऑफ आइदर सिनोनियम और बाय सम अदर मैकेनिज्म। लेट अस सी क्या आ रहा है इसका आंसर। टाइम तो प्लीज रिमेंबर इट्स व्हाट? इन फ्लुएंसी में कर रहा हूं मैं। फ्लुएंसी में सिनोनियम कितना परसेंट लिया मैं? अगर मैं सिनोनियम को कम करना चाहता हूं तो सिनोनियम कम कर सकता हूं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फ्री वर्जन में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और फ्लुएंसी। और ना इसको हम कॉपी करते हैं और फिर चेक करते हैं प्लैगरिज्म कितना आ रहा है। पहले 2 पैराग्राफ मान लीजिए, पहले 2 पैराग्राफ। हां, and finally click on text plagiarism. Let us see now what is the result. The unique second sentence is also unique. हमने 2 पैराग्राफ कर दिए, not all. But remember that don't depend on such tools. पैराफ्रेजिंग क्या करते हैं, ये टूल्स क्या करते हैं, मतलब आपके कॉपी पेस्ट मटेरियल को चेंज तो करके देगा, लेकिन कभी-कभी मीनिंग भी बहुत चेंज कर डालता है। So you should be very much careful while following such kind of tools. Okay, you should be careful. इसका मतलब पैराफ्रेज होने के बाद एक बार अच्छे से प्रूफ रीड कर लो कि आप जो बोलना चाहते थे वो प्रॉपर्ली उसी तरह से हुआ है या नहीं। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर आफ्टर पैराफ्रेज। सो लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट। देखिए 3 पैराग्राफ के लिए कितना टाइम लगता है, बिकॉज़ इट्स सच सो मेनी साइड्स। नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन कि why you are getting a different kinds of result when you are taking with a different tools. The reason is database. वो सॉफ्टवेयर मतलब वो टूल कितने डेटाबेस में चेक कर रहा है और उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। मोस्ट ऑफ दिस फ्री टूल्स डजंट टेक स्ट्रिंजर और वेब ऑफ साइंस जर्नल्स। वेब ऑफ साइंस में जर्नल में जो भी पब्लिश हो रहे हैं या स्ट्रिंजर में जो पब्लिश हो रहे हैं, जनरली उनको ये चेक नहीं करता है, बिकॉज़ इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। प्लीज रिमेंबर, टेकिंग अ टाइम एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस एक रिजल्ट आने तक मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। ये क्या है? एक्सक्लूड यूआरएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? whenever you are publishing your paper, आपने पेपर कहीं पब्लिश किया तो it might be possible कि most of the part of that paper you are specifying those part in your thesis. ठीक है, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो उसका पार्ट आप क्या कर रहे हैं, थीसिस में आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो जनरली क्या मिलेगा आपको वहां पे प्लैगरिज्म बताया जाएगा। क्यों? ऑफ कोर्स इट इज योर सेल्फ प्लैगरिज्म, आपका खुद का ही है। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे पब्लिश हुआ है उस पेपर को, उस पेपर की वेबसाइट यहाँ पे आप लिंक जो है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। तब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस लिंक को छोड़ के मतलब उस वेबसाइट को छोड़ के बाकी सब जगह सर्च करेगा। ओके, और सेम टेक्निक फॉलो की जाती है यूनिवर्सिटी में भी। जब आप अपनी थीसिस सबमिट करते हैं
तो हमको क्या करना रहता है, आपके पेपर जहां जहां पब्लिश है उसकी लिस्ट हमको देनी रहती है, इंक्लूडिंग द URL। ओके, सो दैट वहां पे जो पर्सन जो बैठा है वो क्या करेगा, आपके पूरे URL यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा। इसका मतलब आपके सेल्फ प्लेगरिज्म जो पेपर जो पब्लिश हुए हैं वहां पे चेकिंग नहीं होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेकिंग मच मोर टाइम। Okay, in the meantime, if you have any questions, you can ask me. Hello, participants. You may ask the question to sir. ये यहीं by पे unmute इसका रिजल्ट yourself. आ जाएगा। ओके, इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये यहीं पे चलते रहेगा। Yes, any more questions? Yes, sir. That will be welcome. So I'm stopping my sharing over here. Okay. So now, if you have any questions, you can ask me. We have another 5 minutes with us. Hello, participants. Anyone can ask the question. Either सब कुछ समझा या कुछ नहीं समझा। नहीं सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने। Anyone? Yes, Miss Dr. Ruchi. What's your question, madam? Dr. Ruchi. Thank you for wonderful. Madam, Dr. Pulshan sir. Priya madam, thank you. Sir, I would like to ask one question. Yes, madam, please. See, any kind of research paper that we write, we have to mention in the literature review. Yes. So is there any way out through MS Word that, we write the literature review, like where have we taken the content from? Yes, there are, madam. Okay, there are tools are available. There are certain tools are available. So I request all of you, I will request to all of you to kindly go through my YouTube channel. There are more than, I can say that there are more than 25 videos are there. Okay. I will share those things with you on your, and as well as I will suggest you to join my Facebook group where I'm sharing various information related to what? The research only. So there are tools are available there, madam. Okay. You can join this particular group. As well as if you want to discuss certain issues with me, you can. I'm also sharing my mail ID. And also I'm giving my number. Okay, but call me in the evening timing only. Yes. Any more, madam? Yes, Bhushan sir. Bhushan sir, unmute yourself. Yes, Bhushan sir, if you have any questions, you can. Hello. Yes. Sir, can you suggest any free plagiarism, just like ACO tool? Which one is better? Because mostly a lot of plagiarism is just limitations. Any software, free software, free software. See, under free software there are very few. Like I said, search engine report that I have shared with you. Small SEO tools are there, but there is a limitation of 1000 words. Okay, it means you can take only your research paper only. It is not possible to take the thesis using these tools. Okay, because there is the limitation of what 1000 words or 1500 words. These are some of the limitations. It means within the 1500 words you can have maximum 7 to 8 pages, not more than that.
So it means we can say that you are able to check only research paper, but not the thesis using these tools. Otherwise, you can go with 13. 13 is there, but don't ever use Urkun software. Don't ever use Urkun software by yourself because it is reserved for the university only. Don't ever use Urkun software because ऐसा हो जाता है. What is the why not Urkun? Let us see. Whenever you are taking your plagiarism using Urkun software, तो क्या होता है? आपके जो कंटेंट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं. जब आप उर्कून सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करते हैं तो आपके कंटेंट पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं और जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से चेक करेंगे तो क्या होगा 100% प्लेगरिज्म लिखा जाएगा. ओके, so don't ever use Urkun software for your work. It is reserved for the university. Remember, because there are ऐसे केसेस आ चुके हैं हमारे सामने. तो उसके बाद फिर जो जो प्रॉब्लम्स हमको मालूम है कि हमने किस तरह से टैकल की है. In our university, in non-led university, so I have to get a call that इसको कैसे solve करना है. Don't ever use Urkun because it is not for you, it is for the university. Yes, anymore. Hello, Gupta sir. Yeah. Please ask Yes, your Gupta. question. Yes, Neha madam, any question? Jitendra sir. Anyone? Unmute yourself and ask the question. How much percentage of plagiarism is acceptable? Only 10%, madam. Only 10%. Usha madam? Maximum 10%, not more than that, as per UGC. Thank you one and all for your comments on the chat box regarding the session. So I hope, sir, Ashish sir. Hello, sir. So that is what Okay. all from my side. So at Okay, any sir. moment, any one of you feel any kind of doubt or if you have a certain question, you can discuss with me. I already shared the phone number as well as my email ID. And again, I will request all of you to join or subscribe my YouTube channel. You will find more than 25 videos based on only for the research only. Okay, how to identify the clone journals, how to find a proper, how to get the information about the proper journal, how to get the information about the free journal, UGC Gear journal. Okay, so there are very 25 videos out there, so you can go through those in order to get the additional information. Or otherwise, you can also discuss with me, no issue at all. Okay, sir. Thank you, sir. So Thank you, one Kishore, and sir. all. Yes, sir. So thank you, Kishore, sir, for giving your valuable time to us, for sharing your broad views very clearly, excellently, and briefly about the topic of standardization research tools for e-report writing by the theoretically as well as the practically. Sir also give the detailed demonstration nearly all of the parts. So thank you, sir. And so in this, sir excellently explained what is the meaning of research tools for e-report writing and how to write the research paper effectively and how we can develop the standardization in it. So I definitely said that it will be the very useful to us in enhance our knowledge. So in the last, now I kindly request to anyone from the participant who is interested to share their feedback of the all national 1 week faculty development program ICT tools for effective teaching and learning. So today is the last day of this feedback faculty development program. So anyone who is interested, share their feedback, unmute yourself and share your feedback. Anyone, if you are interested, is anyone You should. in the participant? You should be a faculty. I hope that all of you should say something. Say something, anyone from them. Hello. Hello, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on your wonderful program.
Myself, Dr. Pankaj Kumar Singh from IIT BHU. Sir, all of your lecture were very nice, especially the yesterday's lecture regarding the blog. I have learned about how to make the blog and how to use it. And today's lecture was also very nice regarding the how to make by the use of the MS Word the different things that is required for the writing the thesis or paper, other things that is very nice. One thing I request you, whatever such type of program should you are organizing, you definitely call me also regarding if any such type of courses you are going to do. And at last, thanks a lot. Thank you, Pankaj sir, and we definitely do that in our next FDP. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Neha madam. Hello. Anyone again? Yeah, very good afternoon, sir. Is it audible? Yes, sir. You're audible. Yeah. Thank you, Kamala Nehru Mahavidyalaya College and its faculty for conducting this program. It was really a nice experience to be part of this FDP program. And I have learned a lot, and I am forever grateful to the organization as well as to the staff. Thank you so much. A small request from my side. If possible, can you share the videos corresponding to like all the FDP program? FDP program. Sir, it will already live on YouTube channel, and those links are there in the groups. So from those links, you may those videos anytime and anywhere. Hello. Okay. Thank you, Hello. sir. Thank you, sir. Thank you, Govind sir. Thank you. Hello, madam. Hello, madam. सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो. Yes, madam. Yes, madam. सर आज के सेशन के बारे में बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवन इंफॉर्मेटिव सेशन था. रिसर्च के बारे में बहुत सारी बाबत जो हमें पता नहीं थी उसके बारे में पता चला. साइटेशन के बारे में, रेफरेंस, इवन हमें जो शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे और हमने आंसर दिए उसके वोटिंग, उसके सेकंड्स कितने होते सब पता चला. और इन 6 दिन की बात करें तो सभी सेशंस वेरी फ्रूटफुल थे और सभी जो एक्सपर्ट्स आपने सिलेक्ट किए थे सभी ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जैसे कि हमें कुछ नया पता चला. ऐसे ऑर्डिनरी नहीं, सब कुछ नया लेके आए थे. और इसका इवन टॉपिक भी हमारा एफडीपी का ऐसा था कि कुछ नया सीखने को मिलता है. So thank you very much Kamala Nehru University and सब ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स. और अभी जब भी आप कुछ ऐसा करें तो श्योर हमें ईमेल के जरिए या फिर नंबर के जरिए इंफॉर्मेशन देना. we will absolutely join there. Thank you so much sir. Thank you. Hello. Thank you, Arpita madam. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello, madam. Hi, Radhika madam. I am speaking from Jammu and Kashmir. Yes. Very nice, madam. So this was an excellent opportunity to join this FTP, and I would like to congratulate the whole team of Kamala Nehru Mahavidyalaya and Guru Nole sir for his such an active participation and his ethical involvement in every session. It was so excellent, very beautifully coordinated, and I really loved to be a part of such faculty development program. And congratulations to the organizers, very well coordinated. Thank you, sir. Thank you, Radhika madam. Hello. Thank you so much. Hello. Hello, good myself, afternoon, sir. Yes, sir. Yes, Dr. Usha Chahal. Hi. Hello, Usha madam. May I say, sir? Yeah. Yes, Good afternoon, sir. This was a very wonderful experience, sir. Very informative. This FTV was, and I have gathered lot of insights by attending this FTP. And today's session was very informative, sir. Thank you very much for organizing such a wonderful FTP. Let me know if you will organize in near future all other on topics of FDPs on all other topics. Sir, thank you very much. Many congratulations to the organizing team.
for such a insightful sessions. Thank you, sir. Thank you all. Thank Good you. afternoon. Thank you so much. Usha madam. Hello. Hello, Sir? madam. Yes, sir. Hello. Myself. Yes, sir. Yes. Am I audible? Yes, yes, you Uh, are audible. Harpreet yes, sir. madam. Myself, Dr. Harpreet Kaur from Government Girls College, Janjgir, Chhattisgarh. So it was really nice experience we had in this webinar, which was, sorry, not webinar, this course, which was based on ICT tools. And the use of ICT tools is the need of the hour. And I think without it, not only teaching, learning, but research work is impossible. And today's session was really very beneficial and useful for us. So I would like to thank all the experts, speakers, and the organizing committee. Congratulations to all. Thank you, sir. Thank you, Harpreet madam. Thank you Good for your afternoon. kind Hello. feedback. Hi, hello, madam. Hello. Am I audible? Yes, yes, you are audible. So this is Neha Tiwari. Actually, I'm doing my research. I'm research scholar from Jiva Ji University, and sir, actually, I was also looking for how to prepare Google form and all to collect data online. But really, this was an informative session. I know all the things, and I learned all the things from this faculty development programs. And also, I'm looking forward for this type of FDP programs. Thank you. Thank you so much, madam, for your valuable feedback. And we definitely inform you. Okay. Now we move forward after the valuable feedback session to the vote of thanks. So at the end of this session, I am thankful to the Honorable Dr. Suhasini Vanzari Madam, President of Amartya Mandal, Honorable MLC Advocate Abhijit Vanzari Sir, Secretary Amartya Mandal, and Honorable Dr. Smita Vanzari Madam, Treasurer of Amartya Mandal, for their constant source of support and guidance. I wish to express gratitude towards today's eminent speaker, Dr. S.B. Kishore Sir, for giving his valuable time to us, for sharing his broad views and knowledge with us. So further, I extend our sincere thanks to Dr. Dilip Badwaik Sir, Principal, and Vice Principal, Dr. Pradeep Dahikar Sir, Kamala Nehru Mahavidyalaya, Nagpur, for extend in their support for organizing this event. So I also wish to thank Dr. W. Vasudeva Gurnule Sir, convener of this FDP, for manage and organize this kind of informative event. Thank you, sir. I also give thanks to who involved directly and indirectly for the organizing and successful conduction of this event. I also give my special thanks to the participant who making their presence from entire India on this Zoom platform as well as YouTube link for attending and actively participating in the FDP, particularly and patiently and making this event successful. I hope all of you get enhance your knowledge from all of the resource persons, speakers of the FDP, and keep some time for your valuable feedback, which is the more improvement for us. The feedback link given in the chat box as well as at the groups. And for the kind permission of the chairperson, I declare the end of this national 1 week faculty development program. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Today's session is very, very informative. Thank you. Thank you. Okay. So with your permission, sir, sir, one more thing. Yes. I request all the participants, please put on your cameras. Pretty faces, look at, and we have to take one group photo. It is a memory to the Kishore sir.
1 minute. Giving me. Okay. Thank you. Thank you. Okay. All the Thank you, participants. Gurmila, Thank you, sir. Thank you, sir. Gurmila, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Very nice lecture, sir. Very nice presentation. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So with your permission, I will use, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Kishore, sir. And thanks a lot to all participants. Thank you to the all participants. I hope you copy this feedback link, and this is also provided at your groups. So I end this meeting. Thank you. Thank you so much.